Good evening everyone. Sunscreens, sun protection, धूप से परहेज. This is one of the first steps that you take for preventing aging, open pores, pigmentation, wrinkling, acne, sensitive skin, and in fact every single video that I've done on reequil before, all the skin conditions that we have mentioned, sunscreen is a must for all of them. In fact सारे videos में आपने मेरे मुंह से ये word sunscreen जरूर सुना होगा. मैं हूं डॉक्टर असीम शर्मा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्किन सागा सेंटर मुंबई, और आज मैं आपको सनस्क्रीन के लेबल्स के बारे में बताऊंगा. बिकॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट पेशेंट्स आस्क मी इज व्हाट सनस्क्रीन शुड आई बाय. I also like to call this session how to decode sunscreen labels or how to buy a label. Because let's face it, when you're online or in a store trying to buy a sunscreen, all of a sudden there are so many terms: SPF, UVA, IR, VL, WR, boots, plus, organic, physical, broad spectrum. You get my drift. It's just too confusing to buy a sunscreen unless you know all of these terms and आपके स्किन को इनमें से कौन सी चीजें चाहिए. सो अगली बार आप सनस्क्रीन खरीदेंगे, आई वॉन्ट यू टू बी वेल अवेयर ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके ऑन व्हाट सनस्क्रीन टू बाय. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सनस्क्रीन लेबल्स. पहला लेबल जो आप देखते हैं वो है फिजिकल या केमिकल. फिजिकल सनस्क्रीन्स को हम मिनरल सनस्क्रीन्स, इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स या बैरियर सनस्क्रीन्स भी कहते हैं. कॉमनली इनको सन ब्लॉक्स भी बोला जाता है. इसका बेसिक एम है टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन सन रेज एंड योर स्किन. स्किन का भी जो टॉप मोस्ट लेयर है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज डैमेज द मोस्ट बाय यूवी रेज और सन रेज. सो ये जो सनस्क्रीन्स है, फिजिकल सनस्क्रीन्स, ये आपके सन रेज को डिफ्लेक्ट करते हैं. केमिकल सनस्क्रीन्स को हम ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स बोलते हैं. ये सन रेज को अब्सॉर्ब करते हैं. काम दोनों सेम चीज करते हैं, बट फिजिकल सनस्क्रीन्स आर फॉर सेंसिटिव स्किन, whereas chemical sunscreens can be used for all types of skin. So the next thing that we want to decode is broad spectrum. इस टर्म का मतलब क्या है? Broad spectrum means a sunscreen which can protect your skin from UVA and UVB. बट आजकल इंफ्रारेड और विजिबल लाइट भी स्किन कंडीशंस को वर्सन करता है. दिस कम्स फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच स्क्रीन टाइम फ्रॉम योर चार्जेबल डिवाइसेस. सो ऑल्सो लुक फॉर द लेबल VL or visible light and IR or infrared. So these are, you can think of them as extended broad spectrum. So UVA, UVB, VL, IR. ये आपके चार labels हो गए which come under broad spectrum sunscreens. Some sunscreens have the word sports or the letters WR written on them. ये उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जिनका काम ओपन में रहता है, और पीपल हु आर सिंपली आउटडोर्सी. डोंट मिस्टेक इट फॉर बीइंग वाटर प्रूफ. WR means water resistant, and for 40 to 80 minutes it can resist or it can give you protection even when you're in water. But these are not waterproof, so don't fall for those gimmicks. The next label to look for is SPF. When you see SPF, think of UVB. When I teach people, I often tell them to remember this as sunburn protection factor or factor from UVB. To put it simply, एक सनस्क्रीन कितने इफेक्टिवली UVB रेज को या UVB रेज से बचाता है. So SPF 15 filters out 93%, SPF 30 97%, and SPF 50 98% of UVB rays. Now there are gimmicks. SPF 60, 90. अगर 50 SPF आपको 97%, 98% देता है, are you really looking for more protection? So this is a good time to sound out these sales gimmicks. The other term which you should look for is a PA plus rating. जैसे SPF UVB के लिए है, UVA के लिए PA plus rating है. ये प्लस से लेके 4+ तक एक्सटेंड करता है. So look for the number of pluses on your sunscreen label. So with this, I finished today's session. We've discussed all the labels that you get on sunscreens. I hope आप सभी के doubts clear हो गए होंगे, and the next time you're picking up a sun protection factor or a block, you'll be more aware. If there are any more questions, आप मुझे DM कर सकते हैं. अगले हफ्ते तक अपना ख्याल रखिए. Live, laugh, and don't forget to wear sunscreen. Good night.